questions हैं, please be free to ask them. Thank you. Thank you. Welcome everyone. Thank you for taking the time यहाँ पे आने के लिए. I'm sure आप लोगों के पास you have a lot of stuff to do today, hopefully. So I'm glad कि आपने टाइम निकाला. आज हम एक नए स्मार्टफोन के बारे में बात करें. But more importantly, it's also the re-entry of a brand. एक ऐसा ब्रांड जो उबर पॉपुलर था इंडिया में. वी स्टिल अभी हम पिछले एक हफ्ते से टूर्स कर रहे हैं. हमारा लॉन्च 14 को था, उसके बाद से हम टूर्स कर रहे हैं. वी वेंट ऑन सेल ऑन 18th. बट इन दिस पीरियड कई जगह हम ऐसे लोगों से मिले जो अभी भी ऑनर का फोन यूज कर रहे हैं पिछले 4 साल से और वेट कर रहे हैं बिकॉज दे कुडंट फाइंड एन ऑल्टरनेटिव दैट्स बेटर. यार यू आर स्माइलिंग. Do you know someone who uses Honor phones? So Honor phones, when they existed in India 3 years ago, till 3 years ago, उनके reputation में there was one thing that was constant across the board, which is the quality of the product, the performance, and the value that we provided or Honor brand provided. And the quality is clearly the reason why there are so many people still using Honor phones after 4 years. Whereas in India the standard cycle जहाँ पे लोग phones change करते हैं that is 18 to 24 months. So clearly अगर 48 months तक people are still using an Honor phone, there's something. अब Honor 90 of course in those 3 years, 3 साल जब Honor India में नहीं था, बहुत सारे अपग्रेड्स हुए ब्रांड में. बहुत सारे नए चीज़ों पे काम हुआ. सॉफ्टवेयर पे मैजिक ओएस नाम के एक सॉफ्टवेयर पे काम हुआ. माइक्रोसॉफ्ट के साथ there was a global tie-up of Honor and Magic OS, and Google के साथ with Google services as well. So the Honor brand comes back to India. Of course, we work on bringing it back. आज हम Honor 90 के बारे में बात करेंगे. I'm Shri Hari. I'm a product manager here, and product के बारे में hopefully I'll be able to brief you. But again मैं specifications के through बहुत ज़्यादा detail में नहीं जाना चाहता हूँ because you of course आप smartphone briefings भी attend करते हैं. Everyone comes and talks about specs. कहीं बोर हो जाते हैं, कहीं सुनते हैं, कहीं नहीं सुन पाते. And then you go home, you get a press release, फिर आप वो press release use करते हैं anyways, regardless. So I'll try to keep वहाँ पे कम टाइम स्पेंड करके. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज जो इस फोन में हैं. जो ये फोन लेके आता है मार्केट में. एक क्वेश्चन पूछा था अभी, हम एक इंटरव्यू कर रहे थे, सर ने पूछा था कि why should someone choose Honor? It's a valid question. Already आपके पास इतने फोन्स हैं मार्केट में, इतने ब्रांड्स हैं. क्या जरूरत है एक नए ब्रांड को इवन कंसिडर करने की भी? फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस, इंटेंट्स एंड पर्पसेस, ऑनर विल फील लाइक अ न्यू ब्रांड क्योंकि आप ऑनर को देख नहीं रहे थे स्मार्टफोन सेगमेंट में. नाउ बिफोर आई बिगिन टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ऑनर एज अ ब्रांड, बिकॉज मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी अवेयर, it has a rich history in R&D. In fact, even right now, about 12,000 employees, Honor employees all over the world, in which about 65% of that workforce is only and only R&D, which means the whole focus of the company is primarily on product, on innovation, and everything else of course works as a function to support it. Sales, marketing, every other team supports what R&D builds, but R&D is the core of the company. अब प्रोडक्ट के बारे में अगर एक एक फीचर के बारे में बात करते हैं थोड़ा, एक एक फीचर के बारे में बात करते हैं. डिस्प्ले. अब देखिए, इंडिया एज अ मार्केट बहुत ऑब्सेस्ड है डिस्प्लेस के साथ. हमने ये देखा है इंडियन कंज्यूमर्स को डिस्प्ले अगर अच्छा नहीं है तो नो मैटर व्हाट यू पुट इन द फोन, दे डू नॉट परचेज द फोन वेरी वेल बिकॉज डिस्प्ले इज हाउ यू सी द फोन. आप जो भी फंक्शनलिटी करते हैं आप डिस्प्ले में करते हैं. इंडिया एज अ मार्केट बहुत हेवीली डिस्प्ले ऑब्सेस्ड है. उसके फायदे भी हैं, उसके घाटे भी हैं. घाटे के बारे में भी आपसे बात करूंगा. कर्व्ड quad curve floating display. तो ये it is curved from 4 sides, right? So सिर्फ left या right से it's curved from top and bottom. अब इसका फायदा क्या है? Of course it looks nice, it looks premium, but more importantly it also does, yes, ये देखिए, this is the phone. So it's curved from all sides, top, bottom, left, right. उसका फायदा बस ये है that of course it looks great, but दूसरी चीज ये जो bezels हैं वो bezels curve की वजह से थोड़ा पीछे की तरफ पुश हो जाते हैं. तो आपका पूरा फोकस डिस्प्ले पे रहता है, आपको डिस्प्ले ज्यादा दिखता है. डिस्प्ले स्पेक्स 1600 100% कवरेज of DCI-P3 color gamut.
ये सब फ्लैगशिप ग्रेड स्पेक्स हैं। कोई भी स्मार्टफोन डिस्प्ले के लिए, अगर मैं सिर्फ इसके अपने प्राइस रेंज की बात नहीं करूंगा, किसी भी प्राइस रेंज में अगर आप जाएंगे तो दीज विल स्टैंड एज सम ऑफ द टॉप स्पेक्स। इनफैक्ट सिर्फ हम नहीं कहते हैं, other organizations, so of course AI quality, video quality enhancements on the phone, locally low quality videos or lower quality source, sometimes because of lower network speeds or sometimes because आपको जो videos share हुए वो itself are lower quality. The phone can upscale them, of course 480p footage लेके 4K feeling नहीं देगा आपको, but it will upscale it a bit for slightly better experience. You can see HDR10 plus HDR10 plus happening here. So as I said, it's not just us. DxO Mark, a global testing lab, very credible name. Years and years they've been rating smartphone cameras and displays. We've got a 140 score, 135 score के ऊपर जितने डिस्प्लेस हैं, बहुत ही कम डिस्प्लेस दुनिया में जिनको 135 के ऊपर का स्कोर मिला है. Any display that gets a score above 135 gets rated as the gold display. There are very few phones in the world globally in any price range जिसको gold display rating मिला है. So with all the things that I said till now, it's a flagship display. But Honor 90 की जो flagship specs थे वो शायद कुछ Samsung, Apple के flagships भी आपको provide करेंगे. Oh great, light is off. आपको वो features, वो experience मिलेगा. But why still I say that Honor 90 का display is the best, is better than them as well. और ये dual textured है, ऊपर it's plain glossy, नीचे there is a textured feeling on the back. So that's this one. This is a matte finish. It doesn't take fingerprints easy. It's easy to grip, of course. And of course, classic black ceramic look में आता है. And it's really a very thin and light phone as well. 5000 mAh की बैटरी इसके अंदर है, फिर भी 7.8 मिलीमीटर्स की थिकनेस है. इट्स अ वेरी थिन फोन और साइज में भी बहुत, बिकॉज देखिए बहुत सारे बड़े छोटे फोन्स आते हैं मार्केट में, बट एट द एंड ऑफ द डे इट हैज टू बी wielded in your hand. It has to be usable. Most of it has to be usable with one hand. That's what the phone is built for. Experience wise, Snapdragon 7 Gen 1 accelerated edition. तो जब भी chipset की choice की जाती है, primarily what we look at is, especially this being a phone that's focused on absolute flagship display experience and flagship plus camera experience, because there's AI assisting you through the camera experience as well. So उसके लिए you need a chipset that has AI cores as well. So this, you can see there is a 30% improvement on the AI processing, on neural processing. Of course, the GPU improvement. This is an overclocked version, 2.5 GHz का. More importantly, जब भी chipset choice किया जाता है, we generally go for the fabrication process. I'm sure you've heard of 28 nanometer, 14 nanometer, 7 nanometer processes. This is currently commercially available most advanced processes. 4 nanometer or 4 nanometer chipset is the Snapdragon 7 Gen 1. Cooling system दिया है. This is not a heavy gaming phone. You can game on it. It's not built as a gaming phone. It's built a lot more as a camera-focused design, camera display. Gaming still can be our requirements of daily needs. So about Honor, as I was just talking to some of my friends available here, so Honor is a brand which have the 65% of their entire team just for R&D dedication. So you can see the focus of the brand, how much they are concerned about their R&D, technology, innovations, and the devices they are launching in the market. So Honor, apart from the smartphones, they are into tablets, laptops, wearables. About the product, I think Sri already explained you everything about all the specs. So it's the safest phone for your eyes with 3840 dimming, and it's the first and only, not the first, the only quad display, floating display AMOLED phone. When you watch the video on the phone, then you will see the difference. Maybe you just watch one video with the Honor 90 and watch one video with your current device, then you will feel the difference between the floating display, how it looks like. You will have a wonderful experience of watching video on this first quad curve floating display. This is the
difference which you can just compare between your current phone and any of your current phone and the Honor 90 device. And as we already explained, it has a 200 megapixel with this segment's largest sensor. So the phone is not about just the camera, is not about just the megapixel, but the sensor also matters a lot for the detailing. And the 50 megapixel selfie with AI vlog. So AI vlog is something which is very useful for you guys. I mean, in the last video conferencing, almost three to four guys have bought the phone for their users. They really love this function because this is something which you use for your daily needs. And it has a 4K recording. Very phones have the front and back 4K recording parallelly. Normally the phones have back camera 4K recording, but very few phones have the front 4K recording. And the Magic OS, Android 13 and 4 nanometer Snapdragon 7th generation accelerated edition. So this is not just the people compare, okay, Snapdragon 8, Snapdragon 7, but there is something more you need to compare with the 4 nanometer and accelerated edition. This makes the device compatible for the functions which the Honor 90 have in the mobile. So we have launched two variants for Honor 90. The one is 8GB plus 256GB and the another is 12GB plus 512GB. The one is priced at 37,999 and the another is priced at 39,999. Right now we have 3,000 rupees cashback offer on ICICI and SBI card. Apart from that, we have 2,000 rupees offer on exchange as well as 2,000 rupees additional cashback on some selected cards. Right now the phone is available on Amazon, Reliance and nearby online main stores. And for the first time, we have come up with 30 days phone replacement. So normally, if you go to the market, buy any new phone, companies give the 7 days DOA policy. If it has a manufacturing defect, they replace you with the new phone in 7 days. But we have made it 30 days replacement policy. So that itself shows that how confident we are for our product. We have started 400 service centers across India. Out of 422 centers, we have in Gujarat. One we have started in Ahmedabad. In Ahmedabad, in Gujarat, we have around 360 offline stores, 20 stores in Ahmedabad city only. And as I already explained, we have 30 days over-the-counter replacement policy, which is the best in the industry. Yeah, so I'll not take much more time. I see already took a lot of your time. So thank you everyone. मेरा नाम सीपी खंडेलवाल है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एचटेक इंडिया। सर आज ऑनर का जो ये 90 लॉन्च किया गया है तो क्या फीचर्स है और अभी दूसरी इनिंग में कैसे है? तो सर जैसा कि अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, ऑनर 90 पहला फ़ोन है जहाँ पे हम लोग सेफेस्ट फ़ोन और आइज़ क्लेम कर रहे हैं विथ 3840 डिमिंग। पहला फ़ोन है और ओनली फ़ोन है जहाँ पे हम लोग क्वाड डिस्प्ले एंड फ्लोटिंग डिस्प्ले की बात कर रहे हैं। पहला फ़ोन है जिसमें AI वीलॉग कैमरा है। इसमें 4K फ्रंट एंड बैक कैमरा रिकॉर्डिंग है और अगर आप देखेंगे तो 5000 AMH बैटरी के साथ ये अपने आप में एक इनोवेशन है कि इतना स्लीक एंड लाइट वेट फ़ोन है ये। सर आपका फोकस क्या है, प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करना है या मिडिल? Sir, we will come up with the entire range with the time. So we have launched our mid-premium phone at the moment, and later we will come up with all the high-end phones, mid-premium. We'll cover the complete range to complete all kind of customers' demand. मार्केट में और भी कई सारी कंपनीज है, तो उसके कंपेयर में आपका मोबाइल कस्टमर ले ऐसा क्या फीचर? तो सर अगर आप देखेंगे अभी भी कंपनी, तो अगर आप देखेंगे तो 2 ही 3 कंपनियां हैं। वो पेरेंट कंपनी 2 ही 3 हैं। उन्होंने अपने सब ब्रांड्स कस्टमर को आइडेंटिटी दिखाने के लिए 5-5, 6-6 ब्रांड बना रखे हैं। और अगर आप देखेंगे वो एक ही फ़ोन को पीछे से बैक कवर उसका चेंज करते हैं और उसी को राम श्याम घनश्याम करके लॉन्च कर देते हैं। सो द ऑनर इज़ द फोन वेयर एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि 65% जो वर्क फोर्स है वो सिर्फ R&D के लिए काम करती है। तो बी श्योर दैट वॉट एवर द ऑनर लॉन्च इन द मार्केट इज़ फुली बैक्ड अप बाई R&D, innovation and technology. सर प्राइस क्या रहेगी, कितने मॉडल्स हैं इसके अंदर? So sir, we will cover all the customer price points which are mainly
popular in India. And with the coming time, we will launch all the price point devices, right from the mid premium to high end. कितने मॉडल्स? We will launch around 5-6 model coming soon. ओके, थैंक यू. Thank you. Great. आई तो बोला नहीं.